नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आमर नुआ गोटे नुआ एमसीक्यू सेशन को समस्त को वेलकम जोटा रे कि आमे कार्डियक नर्सिंग ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करबा। कार्डियक नर्सिंग रो क्वेश्चन सॉल्व करबा, कार्डियोलॉजी ऊपर टिके देखिबा तार कोन प्रोबेबल क्वेश्चंस आसे पारिबो आ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आज रो सेशन रे आमे सॉल्व करबा। तो एवरीवन मेक श्योर कि समस्त एक्टिव पार्टिसिपेशन देखेबो आ क्वेश्चंस रो आंसर मते एक्टिवली करबो। ठीक अछि। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चंदन, ममता, रूपश्री, लक्ष्मीप्रिया, गुड मॉर्निंग। अच्छा तो स्टार्ट करिबा क्लास। ओके स्टार्ट करिबा हला। क्वेश्चन नंबर 1 बिफोर यू एवरीवन। A patient with acute left ventricular failure develops severe dyspnea, bilateral crackles and pink through the sputum. Which intervention should the nurse prioritize? Place the patient flat and encourage oral fluids. Position the patient upright and administer prescribed oxygen therapy. Encourage ambulation to improve the circulation. Restrict oxygen because it may suppress the respiratory drive. Yes. Good morning, good morning. Suchasmita, Smir, Ritanjali, Mamali. Good morning everyone. आओ देखो क्वेश्चन आंसर कर दियो फटाफट। पेशेंट एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर देखा जाउची, तार लेफ्ट वेंट्रिकल रे फेलियर देखा जाउची, ता द्वारा डिस्मिनिया, ब्रेथ शॉर्टनेस एंड ब्रेथ, क्रैकल्स, पिंक फ्लोटिस स्पर्टम देखा जाउची। तो ए जगह रे नर्स ता कोन करिया दरकार? बी पोजीशन द पेशेंट अपराइट, position the patient upright and administer prescribed oxygen therapy. हला बी यस। गुड मॉर्निंग संजना संजना कौन सेम अच्छा। Oh, next. A patient with acute myocardial infarction suddenly developed hypertension, cool clammy skin and altered mental status despite adequate fluid status. Which complication should the nurse suspect? Cardiogenic shock, hypertensive crisis, stable angina, pericarditis. Yes, Ranjita, good morning. Question number 2. एडर कोन होची? आंसर हे जबार कार्डियोजेनिक शॉक हैला। गुड मॉर्निंग पूजा। यस रश्मि। कार्डियोजेनिक शॉक ए जगह रे हमर जो देखा जाउची ए कंडीशन ना मायोकार्डियल इंफेक्शन बा हमर जो कार्डियोजेनिक शॉक कंडीशन इज दैट शॉक कंडीशन जोडे रे कि हार्ट इज severely damaged, and is unable to pump enough blood to meet the needs of the body, to meet the necessary needs of the body. से sufficiently pump ही करे पानी blood एतिकी severe damage हमर देखा जाচ্ছে cardiogenic shock होची से condition ना myocardial infarction जोड़ा रे कि हमर included अछि हैला, included अछि। ठीक वर्षा, good morning। टूडा हैला ए। सेकंड थर्ड, which ECG finding is most characteristic of atrial fibrillation? Regular rhythm with identical P wave, wide QRS complexes with complete heart block, irregular rhythm with absent distinct P waves, ST elevation in contiguous leads. Yes. Question number 3 रो option number C हे जबा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हे जबा करेक्ट आंसर हैला। अच्छा ए रेगुलर रिदम विथ आइडेंटिकल पी वेव, ए जो कंडीशन दा एडा हमर पूरे नॉर्मल रिदम रो कंडीशन दा हैला। एडा नॉर्मल रिदम रो कंडीशन दा ए जगह रे कोन से हमर प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल साइनस रिदम। अच्छा वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विथ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ता एक जिनसरा केते बेले देखा जाउची जेते बेले हमर कंडक्शन रे ब्लॉक हे जाइतो, सीवियरली ब्लॉक हे जाइतो कंडक्शन रे हैला। सीवियर कंडक्शन ब्लॉक से कंडीशन में हमर ए सिचुएशन में देखा जाउची। ST elevation in contiguous leads, ST elevation in the contiguous leads एडा होची हमर acute myocardial infarction रो कंडीशन हैला। ST लेवल ता हमर एलिवेट होची।
acute myocardial infarction. है ना? चला, yes लक्ष्मण, ठीक है. Next question number 4. A patient receiving digoxin reports nausea, visual disturbance, and palpitations. Which finding should increase the suspicion of digoxin toxicity? Hypothermia, bradycardia, hypertension, increased respiratory rate. Increased respiratory rate. डिगॉक्सिन कौन करे? डिगॉक्सिन कौन करे ना से करसी हमर हार्ट रेट को पूरा स्लो कर दी है ना, हार्ट रेट को स्लो कर दे, जोटा कि हमर ब्रैडिकार्डिया सिचुएशन का कोचे ये हमर कौन देखौची नेगेटिव नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देखो, ठीक अछि. तो से कंडीशन रे हमर ब्रैडिकार्डिया हे जबा करेक्ट आंसर, करेक्ट, ठीक अछि. Ritanjali, Mamta, Sanjana, Lakshmipriya, Basant. Yes. Next. A patient with heart failure is prescribed furosemide. Which laboratory value requires particularly close monitoring? Serum potassium, serum bilirubin, hemoglobin, serum amylase. Question number 5. Heart rate below 60 beat per minute. Yes. Option number A will be the correct answer. Option number A will be the correct answer. अच्छा, serum potassium को केमिति होची जल्दी देखिबा हमें furosemide. Furosemide एरा कोन? एरा गोटे लूप डायल्यूटिक ता. अब एरा कोन करची? It helps the kidney to excrete water, sodium and potassium. A water, sodium, potassium सब excretion करला बेलगु this can lead to hypokalemia, low potassium. तो हमरो serum potassium level को affect करची ना नहीं, serum potassium level को affect करची ना नहीं, आउ एडा हमरो dangerously affect करि पारे कहा को heart beat को affect करि पारे. कौन affect करबा? arrhythmia condition देखलेबा, arrhythmia condition देखो, ठीक अछि. and excessively से हमरो कोन करबा heart rate रे भी problem करि पारे serum potassium. Next. Which clinical finding is most consistent with right-sided heart failure? Think through this button. Pulmonary crackle as the primary finding, dependent peripheral edema and jugular venous distension, severe hemoptysis. It is dependent peripheral edema and jugular venous distension. Hello? Say dependent peripheral edema and jugular venous distension. Next. A patient with acute coronary syndrome develops chest pain that is not relieved by rest and is associated with diaphoresis. Which nursing action is the priority? Encourage the patient to walk, obtain urgent assessment and initiate prescribed acute coronary syndrome management, give a high-fat meal, place the patient in Trendelenburg position routinely. B? Yes. Obtain urgent assessment and initiate prescribed acute coronary syndrome management. Diaphoresis माने कौन? Diaphoresis माने कौन? The chest pain जो chest pain का नहीं माने relief नहीं, continuous chest pain associated with sweating. Unrelieved chest pain associated with sweating. एड़ा देखा जाऊ जे हमर को केस रे ए myocardial infarction केस रे excessive sweating, ठीक अछि. Next. Which cardiac biomarker is considered highly specific for myocardial injury? Serum amylase, troponin, bilirubin, C-reactive protein.
जेतेबेले मायोकार्डियल सेल्स गुडा सब हमर डैमेज हे जिवो ना जेतेबेले मायोकार्डियल सेल्स रे तिबा जो ट्रोपोनिन कंपोनेंट सेडा सब ब्लड रे रिलीज हबा आरंभ हिजो हैला ट्रोपोनिन 1 आउट 2 एउडा को हमर बायोमार्कर्स बडा काम करी जोडा के हार्ट रे प्रेजेंट अछि तो जदि हार्ट रे मसल्स हार्ट गोटे मस्कुलर स्ट्रक्चर ता हार्ट रे मसल्स जदि डैमेज होउछि हार्ट मसल्स जदि डैमेज होउछि ताहाले हमर जो कंपोनेंट ता रिलीज हबो ब्लड रे सेडा होछि ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन को देखि हम जानि परिबा जे हमर मायोकार्डियल इंजुरी हेछि कि ट्रोपोनिन नेक्स्ट a patient with infective endocarditis is being assessed for complications. Which finding may indicate embolization, sudden neurological deficit, increased appetite, bilateral hearing improvement, reduced urine concentration only? Myosin release হবে then troponin release হবে troponin গুড়া মার্কার করা কাম করে a sudden neurological deficit correct answer हो जाएगा है ना अच्छा एडी जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होची इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस रे कोन हुए ना हमरो वाल्व गुडा करे हार्ट रो वाल्व रे बैक्टीरियल वेजिटेशन ग्रो करे आरंभ करि जाय है ना बैक्टीरियल वेजिटेशन ग्रो करे आरंभ कर जाय जोटा कि हमर इंपैक्ट पकेबो नर्वस सिस्टम को एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमर न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट कोटे देखा जिवो नेक्स्ट a patient with severe aortic stenosis reports syncope during exertion. Which explanation is most appropriate? Reduced cerebral perfusion during exertion due to the limited cardiac output, increased coronary perfusion caused by valve obstruction, increased ventricular filling caused by reduced afterload, excessive pulmonary drainage. Excessive pulmonary drainage. Question number 10. Yes. ये जो aortic stenosis रो माने होची aortic valve opening narrows aortic valve opening ना सरू हे जाउची जा द्वारा कि blood supply to body is restricted तो ब्लड सप्लाई बॉडी को रिस्ट्रिक्टेड हे जाउची बोली कहले हमरो रिपोर्ट सिनकोप माने बेहोश हे जिबाडा अनकॉन्शियसनेस हे जिबा ड्यूरिंग एक्सर्शन टाइम रे माने कोन से फिजिकल एक्सरसाइज बा कोन से फिजिकल काम कला पूर्व कला टाइम रे कोन होची ऑलरेडी हमरो आउटिक वाल्व हमरो नैरो हे गी अछि the body cannot meet the even the basic demand of the blood basic need basic जति कि दरकार ब्लड सेति कि डिमांड को मत फुलफिल कर पारनी तो एडी कोन होची ना हमरो ब्रेन को मध्य फिजिकल एक्सरसाइज जते बेला हमर एक्सेसिबली हे जाउची ब्रेन को मध्य ब्लड does not reach properly जा द्वारा कि सिनकोप कंडीशन ना देखा जाउची सिनकोप कंडीशन ना देखा जाउची बा बेहोश हे जिबा कंडीशन ना इसी जिंस का देखा जाउची हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 which finding is most characteristic of cardiac tamponade hypertension bradycardia and bounding pulse hypotension muffled heart sounds and jugular venous distension severe hypertension and pulmonary edema in every case increased pulse pressure with warm extremities yeah B hobo yes hypotension muffled heart sound and jugular venous distension एडा को हमर ब्रेथ टायर्ड बोली कहल जाउची ब्रेथ टायर्ड बोली कहल जाउची हैला आ एडा हमर कार्डियक कंपोनेंट को डिटेक्ट करिया पई बोली बा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग पई बोली एडा हमर एसेंशियल ठीक अछि एडा हमर हमें ए जिंस को देखि हमें आइडेंटिफाई कर कैरेक्टराइज कर ठीक अछि गुड मॉर्निंग सागरिका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 a patient with pericarditis reports chest pain that improves when sitting forward which assessment finding would support this diagnosis diffuse ST segment elevation pathological Q wave in a single coronary territory absent heart sound in all cases persistent pain relieved by strenuous exercise
Next slide. Yes, Joshna. এটা হচ্ছে diffuse ST segment elevation. Diffuse ST segment elevation ତା ସହିତ accompanied by PR segment depression. PR segment depression एटा होची हमर chest pain बा pericarditis रो गोटे diagnosis बा assessment हैला A. Next question number 13. A patient with hypertension is prescribed an ACE inhibitor. Which adverse effect should the nurse specifically monitor for? Persistent dry cough, severe hypoglycemia in every patient, increased platelet count, orange discoloration of the urine. ACE माने कोन? ACE माने होची angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme. है ना? कौन होगा ये केस रे? Question number 13. Persistent dry cough. Yes. अब ये जिनसोटा काहेंगे होची? ये जो जिनसोटा जो सिचुएशन टा काहेंगे होची? It is because of accumulation of bradykinin in the respiratory tract. Hello? Persistent dry cough. Yes. Next also, question number 14. A patient taking an ACE inhibitor developed facial swelling, difficulty breathing. Which complication should the nurse suspect? Pulmonary embolism, angioedema, stable angina, deep vein thrombosis. A. Good morning, Sangeeta. Question number 14. It is angioedema. Hello? Angioedema idea amara dekha jaଉଛି ଆଉ angioedema amara केमिति characteristic? It is characterized by rapid swelling of face, lips, tongue and airway, leading to breathing difficulties. Hello? Next question. Answer question number 15. A patient with chronic heart failure is instructed to monitor body weight daily. Which finding should be reported promptly? Sudden weight gain over a short period, stable weight over several weeks, mild increase in appetite, normal daily variation only. Question number 15. Chronic heart failure जदि अच्छी ताहले से पाका पाकी हमरो sudden weight gain over a short period of time हमरो देखा जिवो ए जिंसटा को हमको promptly नोट करिवार अछि जोडी की rapid weight gain ता हमर पाका पाकी केमिति रहइबो ओ जगह को हमें माने नोट करिवाटा इंपोर्टेंट माने पाका पाकी 2 to 3 pounds daily पढुची इंक्रीज होची आ नियरली 5 pounds weekly यदि इंक्रीज होची ताले दिस इज अ कोन इंडिकेटिव साइन आ एटा हमर जो वेट ता गेन जो होची बोली कहूचे कम पई होची इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्यूट फ्लूइड रिटेंशन इट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्यूट फ्लूइड रिटेंशन आ वेट गेन ना हमर एटा देखा जाउची जो एटा हमर रिपोर्ट करिवाडा नेक्स्ट क्वेश्चन Which intervention is most appropriate for a patient with peripheral artery disease? Encourage smoking cessation and prescribe walking or exercise therapy. Apply tight compression bandages routinely.
Keep the legs continuously dependent. Apply direct heat to ischemic feet. Apply direct heat to the ischemic feet. कौन करेगा? सुदीप्ता, सागरिका, विष्णुप्रिया. हाँ, encourage करेगा smoking, आउ smoking cessation, prescribe walking or exercise therapy. है ना? Smoking को बंद करा हबा, exercise और walking therapy बारंबार दिया जाए. जहाँ द्वारा कि टिश्यू और सेल्स मानों को oxygenated blood मिल पाएगा. A patient with deep vein thrombosis suddenly develop dyspnea and pleuritic chest pain. Which complication should the nurse suspect? Pulmonary embolism, chronic stable angina, cardiac tamponade, aortic stenosis. Aortic stenosis. A. Question number 17. It is pulmonary embolism. Pulmonary embolism. Pulmonary embolism रे माने एरा कोन होची जिंसडा एठी देखो ना ब्लड क्लॉट जदी हमर डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होची ब्लड क्लॉट from a deep vein thrombosis कौन हबो ब्रेक हे गला परे ब्लड स्ट्रीम को जीवो and it can lodge in the lungs. It can lodge in the lungs, and this blood flow, age of blood flow हमर restricted हे रहिबो. It can cause shortness in breath रे shortness हबो जहा जोगो कि हमर dyspnea and characteristic chest pain मध्ये हमर ए जगह रे देखा जाय. Characteristic chest pain मध्ये ए जगह रे देखा जाय. है ना? Good morning विष्णुप्रिया. Next, left sided heart failure को हाँ ये embody करो. A patient receiving warfarin for atrial fibrillation require laboratory monitoring. Which test is used to assess its anticoagulant effect? PTT only, INR, serum troponin, bleeding time only. It is B. Yes, Joshna. INR. Hela INR ro mane hela kono international normalized ratio. APTT जदि देखिबा हमर थ्रोम्बिन थेरेपी को ही सी हमर माने असेस करछि. थ्रोम्बिन थेरेपी को सी हमर असेस करछि. बाकी हमर सीरम ट्रोपोनिन हार्ट मसल डैमेज को असेस करछि. आउ ब्लीडिंग टाइम ए जो जिनसडा हमर प्लेटलेट टाइम को प्लेटलेट फंक्शन को असेस करछि. हैला इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो. Next, a patient receiving unfractionated heparin develop a sudden platelet count reduction and new thrombosis. Which complication should the nurse suspect? Disseminated intravascular coagulation, heparin-induced thrombocytopenia, iron deficiency anemia, vitamin K toxicity. It is heparin-induced thrombocytopenia. B. Yes, Anita. Joshna, Lakshmipriya. Next. Which finding is most characteristic of left-sided heart failure? Ascites as the only manifestation, pulmonary congestion and dyspnea, enlarged liver without respiratory symptoms, peripheral edema without the pulmonary involvement. It is pulmonary congestion and dyspnea. Left-sided heart failure सहित हमर pulmonary congestion और dyspnea बा shortness in breath हमर associated हे गरे एजेंट सारा देखा जाउछ. Next, a patient with ventricular tachycardia become pulseless and unresponsive.
Which intervention should be initiated immediately according to the resuscitation protocols? Oral beta blocker administration, immediate defibrillation with CPR according to the appropriate algorithm, carotid massage, oral fluids. Question number 21. Question number 21. Ventricular tachycardia become pulseless and unresponsive. तो ये जगह हमें immediate defibrillation with CPR according to appropriate algorithm ये condition ना हमें संगे संगे protocol अनुसार ये को provide करा जाएगा. Yes. Next. 22. A patient with hypertension asks why uncontrolled blood pressure is dangerous even when there are no symptoms. Which explanation is most appropriate? Hypertension can cause progressive target organ damage without the early symptoms. Hypertension affects only the skin. Hypertension permanently protects the kidney. Hypertension prevents atherosclerosis. It is? Hypertension can cause progressive target organ damage without early symptoms. Hypertension होची हमरो को हुआ जाउची एटा होची साइलेंट किलर. धीरे धीरे हमर ये मेजर ऑर्गन्स मान को टारगेट करके तार डैमेज कर दोची हैला. तो ए जिंसडा हमरो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर सिम्पटम्स नाही हैला. तो ए जगह रे हमर ए एक्सप्लेनेशन ता सब अप्रोप्रिएट देखा जिवो हैला. यस एस्पिरेंट. क्वेश्चन नंबर 23. Which assessment finding is most suggestive of the aortic dissection? Sudden severe tearing chest or back pain with possible pulse or blood pressure differences, gradual mild ankle edema, painless hematuria only, chronic productive cough. Chronic productive cough. Yes, Rita. Good morning. Good morning. Question number 23. Aortic dissection होची बोली कहले tearing and ripping pain जो chest रे रहूची सेटा हमरो sudden severe tearing chest or back pain with possible pulse or blood pressure differences. This will be the correct assessment जोटा कि हमें aortic dissection time रे देखी पाइबा. This is the most suggestive one. Next, question number 24. A patient with heart failure is prescribed spironolactone. Which laboratory abnormality is particularly important to monitor? Hypokalemia, hyperkalemia, hypocalcemia, hypernatremia. A. Oh, Vishnu. Question number 24. एरा कौन स्पाइरोनोलैक्टोन दा होची गोटे पोटेशियम पोटेशियम को हमर एडमिनिस्टर करि पारुथबा वाला या फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ता गोटे हैला. पोटेशियम डायूरेटिक ता गोटे ठीक अछि. तो ये हमर कोडी ना कोडी पोटेशियम लेवल को डिस्टर्बेंस करथबा. तो हियर ऑप्शन नंबर हाइपोकालेमिया हबो ना हाइपरकालेमिया हबो. हाइपोकालेमिया ना हाइपरकालेमिया. देखो पोटेशियम डायूरेटिक ता ये कोन करूची ये हमर एल्डोस्टेरोन ऊपर नेगेटिव माने एल्डोस्टेरोन ऊपर इंपैक्ट पकोची. एल्डोस्टेरोन ऊपर इंपैक्ट पकले कोन होची ना पोटेशियम रे एक्सक्रीशन ना हमर प्रॉपर्ली हे पारुनी जा द्वारा कि पोटेशियम दा रिटेन हो जाउची बॉडी रे. पोटेशियम इज प्रेजेंट इन द बॉडी जा जको कि हाइपरकालेमिया देखा जिवो ना. हाइपरकालेमिया देखा जिवो ना. पोटेशियम लेवल इज इंक्रीज्ड इन द बॉडी. हां एडा होची गोटे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ता. यस लक्ष्मी. हां पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक ठीक अछि. तो एटी हमर बी हे जिवो त करेक्ट आंसर हाइपरकालेमिया हबो. यस हाइपरकालेमिया हबो करेक्ट. Next question number 25. A patient with chronic stable angina is prescribed sublingual nitroglycerin. Which instruction is most appropriate? Swallow the tablet whole with water. Take it only after vigorous exercise. Use it as prescribed at the onset of the anginal symptoms and seek emergency care if symptoms persist according to the prescribed protocol. Store the tablet in an open container exposed to air and sunlight. Yes, potassium conserve ହେଇକି ରହି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ହାଇପରକାଲେମିଆ ହେଇଛି. Yes. एटा जिवो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. C. Yes.
Next is question number 26. A patient with acute decompensated heart failure has severe dyspnea and pulmonary congestion. Which hemodynamic change is primarily responsible for pulmonary edema in left ventricular failure? Decreased pulmonary capillary pressure, increased pulmonary capillary hydrostatic pressure, decreased systemic vascular resistance only, increased plasma oncotic pressure. Question number 26. Question number 26. It is increased pulmonary capillary hydrostatic pressure. है क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी हेजबा जेतु लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होईची तो हमर इट कॉजेस द ब्लड टू बैक अप इनटू द लेफ्ट एट्रियम हैला पुनी लेफ्ट एट्रियम का पल्मोनरी वेन को पुनी आउट ब्लड ता बैकअप हो जाउची जहा द्वारा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ता पल्मोनरी कैपिलरी रे बढ़ी जाउची एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हमर ब्लड वेसल्स रे फ्लूइड उडा को सब बाहर गिरी लंग रे जाके अक्युमुलेट हो जाउची एज एंड इट कॉजेस पल्मोनरी एडिमा है इट कॉजेस पल्मोनरी एडिमा ठीक अछि त लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एरा सहित हमर एसोसिएटेड हेगिरी रहिला A patient with chronic heart failure develops worsening fatigue, oliguria, and cold extremities. Which compensatory mechanism contributes to these findings? Reduced sympathetic nervous activity, increased sympathetic activation and peripheral vasoconstriction, complete suppression of the renin-angiotensin enzyme, renin-angiotensin system, increased renal sodium excretion. Yes. Question number 27, it is option number B. Increased sympathetic activation and peripheral vasoconstriction. Peripheral vasoconstriction. Yes. Iti, Lima, Joshna, Ashirvad. Next. Which clinical finding is most suggestive of cardiac output reduction? Warm extremities with bounding pulses, increased urine output, cool extremities with weak peripheral pulses, elevated pulse pressure with hypertension. Cardiac output reduction बोले कहले हमर कार्डियक माने हार्ट बहुत प्रॉपर्ली हमर पंप करि परनी ब्लड आ हार्ट पंपिंग न करि परले हमर जो पेरिफेरल पल्सेस आ या फिर हमें कहि परबा एक्सट्रीमिटीज माने हाथ पाद गोड़ एवडा को सब हमर कोन हम ना ठंडा पडिया को लागिबो बिकॉज़ ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन that are being provided there. So it cool extremities with weak peripheral pulses. Question number 29. A patient with acute coronary syndrome is prescribed morphine for severe persistent pain. What is the primary nursing concern while administering this medication? Monitor respiratory status and blood pressure, encourage rapid ambulation, restrict oxygen monitoring, administer it without assessing the vital signs. Question number 29. Morphine कथा कहिछि हला त morphine दा कोन it is a potent opioid analgesic. Potent opioid analgesic ता ठीक अछि जहा द्वारा कि से respiratory depression and hypertension cause करि परिबो and hypertension cause करि परिबो तो ए जगह रे हमें कोन करिबा दरकार जेहेतु से हमर ब्लड प्रेशर आ रेस्पिरेटरी स्टेटस ए सब को हमर अफेक्ट करूची तो हमको सेही जिंसटा को ही फोकस करिबा दरकार सेही जिंसटा को ही फोकस करिबा दरकार इट इज द ऑपॉइड एनाल्जेसिक यस नेक्स्ट क्वेश्चन a patient with myocardial infarction develop a new harsh systolic murmur and sudden deterioration which complication should the nurse suspect ventricular septal rupture stable angina chronic venous insufficiency essential hypertension it is yes it is ventricular septal rupture ventricular septal rupture yes repeated pulse check should be done. Question number 30 31 a patient several days after myocardial infarction develops sudden hypotension elevated jugular venous pressure and muffled heart sounds which complication should be considered acute pericardial tamponade chronic hypertension stable ventricular hypertrophy peripheral arterial disease.
जो बेक ट्राइड कथा कहिथिले आमे हैला बेक ट्राइड कथा कहिथिले एक्टिव पेरिकार्डियल टैम्पोनेट कथा देखि कि आमे एठी देखुचे तो सेति पई बोली ऑप्शन नंबर ए हिज बेडी करेक्ट आंसर बेक ट्राइड रे आमे कोन कहिथिले हाइपोटेंशन एलिवेटेड जैकुलर वेनस साउंड मफल्ड हार्ट साउंड्स एटा तो थिला नेक्स्ट which ECG interval primarily represent ventricular depolarization and repolarization together PR interval QT interval RR interval ST segment alone Q टा हमर रिप्रेजेंट करथुला ventricular depolarization to the completion of T wave ventricular repolarization देखा जाउछ तो एडी हमर QT interval एटा appropriate page हैला yes next a patient develop a prolonged QT interval. Why is this finding clinically significant? It can increase the risk of ventricular dysrhythmias. It confirms atrial fibrillation. It indicates complete absence of ventricular activity. It always indicates hypernatremia. QT interval, yes. एडारे हमरो prolonged QT interval अछि बोली कहले ventricular dysrhythmia को हमरो यार रिस्क ता बढ़े पाए ventricular rhythmia को रिस्क बढ़े पाए ठीक नेक्स्ट which electrolyte abnormality is particularly associated with ventricular dysrhythmias and prolonged QT interval hypokalemia hypernatremia hypercholesterolemia hypercalcemia prolonged QT interval रो माने हैला हमरो कोन hypokalemia ठीक अछि prolonged QT interval माने hypokalemia A patient with severe bradycardia develop hypotension and altered mental status. Which intervention may be required according to emergency cardiac management protocols? Immediate oral fluid administration, atropine or pacing depending on the clinical situation and protocol. Encourage the patient to walk. Administer a beta blocker. Atropine or pacing depending on the clinical situation and protocol. Atropine da hoji amara gote prakara anti-chlorogenic medication da and जेतेबेले आमे ए सपोर्ट ता दोचे एडवांस ACLS एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट हमर प्रोवाइड करा होची ए प्रोटोकॉल अनुसार हमर पहुंच जाउची हैला ACLS एडवांस्ड cardiovascular life support. Next question 36. A patient with atrial fibrillation is receiving anticoagulation. What is the primary reason for anticoagulant therapy? To prevent thromboembolism, particularly ischemic stroke, to increase ventricular contractility, to eliminate all irregular heartbeats, to increase platelet production. It will be to yes, antichlorogenic transfusion. It is to prevent thromboembolism, particularly the ischemic stroke. Next question also. Which clinical finding is most characteristic of peripheral venous insufficiency rather than arterial insufficiency? Intermittent claudication relieved by rest, dependent edema and venous stasis changes, absent peripheral pulses, pain worsened by limb elevation. Question number 37. It is dependent edema and venous stasis changes. Dependent edema and venous stasis changes. Next question. A patient with chronic venous insufficiency has a lower leg ulcer. Which location is most characteristic? Lateral border of the foot, medial malleolar region, fingertips, heel only. Question number 38. इरावा 38 हला B. Medial malleolar region. जोटा कि हमारा को region ना inner ankle region.
inner ankle region. Next, a patient with peripheral arterial disease reports severe foot pain at rest that improves when the leg is placed in a dependent position. What does this finding suggest? Advanced arterial insufficiency, normal peripheral circulation, acute venous congestion only, improved arterial perfusion. It is advanced arterial insufficiency. है ए कंडीशन रे आमे केतेबेले करा जिवो जेतेबेले एडवांस्ड आर्टेरियल इनसफिशिएंसी देखा जाउची से कंडीशन रे द लेग इज प्लेस्ड इन अ डिपेंडेंट पोजीशन जोटा कि हमरो सीवियर फुट पेन को एड्रेस से इंप्रूवमेंट कर करे. नेक्स्ट, a patient with a prosthetic heart valve is receiving long term anticoagulation. Which nursing instruction is particularly important? Stop the anticoagulation whenever minor bruising occurs without medical advice. Report unusual bleeding and maintain consistent follow-up for anticoagulation monitoring. Double the medication dose after a missed dose. Avoid all physical activity permanently. Question number 40. जेतेबेले हमर long term anticoagulation जेतेबेले देखा जाउची सेतेबेले we need to report the unusual bleeding and maintain consistent follow-up for anticoagulation monitoring. Option number B is correct answer. Yes, Joshna, Mamta, Ashirwad, Victor. Next, a patient with infective endocarditis has persistent fever despite antibiotic therapy. Which complication should the nurse monitor for? Heart failure due to valvular damage, improved cardiac output, permanent hypertension in all cases, increased platelet protection. Question number 41. जेतेबेले हमरो infective endocarditis आउ persistent fever सहित associate हेगी रहउची ताहाले valvular damage सहित heart failure ता होची हमर को इंडिकेटर ए जिंसडा को हमरो मॉनिटर करबा दरकार हैला ए जिंसडा मॉनिटर करिया दरकार. Question number 41 option number A will be the correct answer. Question number 42, which finding is commonly associated with acute rheumatic fever involving the heart? Acute rheumatic fever involving the heart, migratory polyarthritis with evidence of carditis, isolated hyperglycemia, persistent jaundice, severe nephrotic syndrome as the primary feature. Acute rheumatic fever कोटा हमारा finding, most common finding. John's criteria अनुसार migratory polyarthritis जोटा कि हमारा carditis रो evidence है ना with the evidence of carditis एडा होचे हमारा कार acute rheumatic fever रो finding. A patient with mitral stenosis developed dyspnea, fatigue, and atrial fibrillation. Which hemodynamic consequence is most directly related to the valve lesion? Obstruction of blood flow from the left atrium to the left ventricle, obstruction of blood flow from right ventricle to pulmonary artery, increased flow from the left ventricle into the aorta, complete obstruction of the vena cava. Complete obstruction of the vena cava. Question number 43. It is obstruction of the blood flow from the left atrium to left ventricle. Left atrium to left ventricle रे obstruction हवा काहे कि नाइडी हमर mitral valve stenosis देखा जाइछ. Next, a patient with mitral regurgitation develop pulmonary congestion. Which mechanism explains this complication? Backflow of blood from the left ventricle into the left atrium during the systole, backflow from the right atrium into the vena cava, obstruction of pulmonary venous return, reduced left atrial pressure during the systole. Question number 44. Yes, A. Backflow of blood from the left ventricle into the left atrium during the systole. Next question is about a patient with aortic regurgitation. Mitral regurgitation. Aortic regurgitation is being monitored for complication. Which hemodynamic change is characteristic? Increased volume load on the left ventricle, reduced left ventricle filling, complete obstruction of the systemic blood flow, reduced stroke volume in every patient. It is increased volume load on the left ventricle. जदि aortic regurgitation का ही होची ना तमरा left ventricle पाखरे aortic valve ता थाउची से जगह जदि regurgitation ही होची ताले हमर left ventricle रे overfilling हेबा रही हैला. Option number A. Next, a patient with hypertensive emergency has severe blood pressure elevation with acute neurological symptoms. What is the priority nursing principle? Rapidly normalize blood pressure without monitoring. Provide controlled blood pressure reduction with close monitoring and prescribed IV therapy. Encourage vigorous exercise. Delay treatment until the symptoms disappear.
एक केस रे हमें कौन करिया दरकार ना we need to provide controlled blood pressure reduction with close monitoring and prescribed IV therapy. है ना? Next question is a patient with acute pulmonary edema is receiving IV loop diuretics. Which response best indicates the improvement? Increasing fractures and worsening dyspnea, reduced respiratory distress and improved oxygenation, increasing jugular venous distension, progressive weight gain. It is reduced respiratory distress and improved oxygenation. है ना? Yes. Next also 48. A patient with heart failure is prescribed an ACE inhibitor and spironolactone together. Which laboratory parameter require close monitoring because of the combined risk? Serum potassium, serum albumin, hemoglobin A1 और ना serum amylase. Serum amylase. एडा इसे इनहिबिटर कथा हम जो ब्राडिकाइनिन जो को हमरा ब्लॉक ही जाउतला आ बिसरा हम देखि देइतिले ब्राडिकाइनिन जो को ब्लॉक ही जबा जब एल्डोस्टेरोन लेवल दा हमर कोन करतला ना पोटेशियम एक्सक्रीशन को रिड्यूस कर दोतला एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच हैड वेरी सीवियर इंपैक्ट पकोतला सीरम पोटेशियम लेवल दा हमर इटी अफेक्ट होतला. Next, a patient develops sudden severe calf pain, swelling and warmth following prolonged immobilization. Which nursing action is most appropriate? Massage the affected leg, encourage vigorous exercise, suspect DVT and arrange prompt medical evaluation, apply deep pressure to the calf. कौन करिवा जगह रे ए काफ पेन स्वेलिंग जदी देखा जाउची बहुत ही अधिक टाइम पीरियड पई बोली आ ता सहित मूवमेंट भी हमर जदी न ही परची से जगह रे we need to suspect DVT, deep vein thrombosis. Suspect करिवा deep vein thrombosis is suspected and prompt medical evaluation need to be given. हैला आउ एडा हला लास्ट क्वेश्चन ना तमा मानक पई बोली होमवर्क मेक श्योर ए क्वेश्चन रो आंसर समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लिखि के जणेबा आ आजिरो क्लास केमिति लागिला सेरा मते कमेंट सेक्शन रे लिखि के जणेबा हैला क्वेश्चन पढि दउचे पेशेंट विथ coronary artery disease is being discharged after stabilization. Which lifestyle intervention has the strongest overall cardiovascular benefit? Smoking cessation combined with appropriate diet and regular physical activity, complete avoidance of all physical activity, increasing dietary saturated fat, discontinuing prescribed cardiovascular medication once the symptoms improve. ठीक अछि ए क्वेश्चन रो आंसर मते कमेंट सेक्शन रे लिखि जणाइबा आजिर क्लास केमिति लागिला सेटा मते. Thank you so much everyone. See you next time. Until then, जय जगन्नाथ.